Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu, and other is the Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 1st of March. The first news is IPCC warns of multiple climate hazards. A recent report which was released by the IPCC. We'll see the detail about this particular report. Second, PM Gati Shakti project to boost public-private partnership. Again, something very important to boost the logistic economy in our country. Third, Quadgrouping is a diplomatic arrangement. So this is in light of the Quadgrouping that is basically has inceptions and its roadmap in the future. The second last is India to send humanitarian assistance to Ukraine. We have seen the crisis ongoing in the Ukraine after Russia trying to invade Ukraine. तो जो लोग इंडिया के जो सिटीजन है जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको किस तरह से एक असिस्टेंस देने की जरूरत है, उनको इवैक्यूएट करने की जरूरत है. सो इंटायर एफर्ट्स फ्रॉम इंडिया विल सी दैट आल्सो. The last is an editorial Ukraine situations India's national interest. So these are all the important news and our tutorial from the day. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based questions. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before I start, just to tell you about the YouTube channel by Apti Place Academy for Civil Services, you can subscribe our channel. If you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And we have a newer app for you that is like App 2.0. This is the updated version of app where you will get a lot more other facilities. For more details, you can refer to the link which is mentioned in the description box. So starting with the first news of the day, that is IPCC warns of multiple climate hazards. So recent में IPCC ने अपनी report दी है, the Intergovernmental Panel on Climate Change. So this particular news is important for your General Studies Paper 3, that is Conservation, Environmental Pollution, Degradation and EI. So we'll understand this news in detail, what is the context and what is in the report specifically focuses upon the India's concern. So we'll see and understand because this is something going to be very important both for your prelims and main stages of the examination, right? So according to the latest report, जो IPCC की पैनल है उन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड फेसेस एन अनअवॉइडेबल मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड्स जो कि आने वाले 2 दशकों में होगी द नेक्स्ट 2 decades with the global warming of anticipation around 1.5 degrees Celsius. So this is a major finding of the report that the IPCC has to highlight. एंड आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स होती है वो किसी कंट्री पे स्पेसिफिक नहीं होती है, ये अक्रॉस द ग्लोब पूरे वर्ल्ड के लिए फोरकास्ट होती है कि क्या परफॉर्मेंसेस है. बट इन दिस news will more focus on India's aspect. So the report highlights even the temporarily exceeding of the global warming, or you can say the warming has led to an additional severe impact, and this is something which would be irreversible because जो भी environmental के detrimental effects human activities की वजह से हो रहे हैं उसकी भरपाई करी जाना काफ़ी मुश्किल है. So that is the reason we always call for a sustainable way of life, a sustainable way of use of having the uses of fuel, electricity, fossil fuel, any stuff that is there. So वहाँ पे ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल वे में होनी चाहिए because once the thing is lost, it is going to be irreversible in nature. So I think very important report that was basically recently released by the IPCC. Now looking into the human-induced climate change, कौन कौन से human-induced इस तरह के activities हैं जिन्होंने climate change को promote किए, right? So that include more frequent and intense extreme event जिसकी वजह से एक adverse impact देखी गई है हमारे नेचर में because of the interference that was made by the people, right? We have also highlighted in the recent news, कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जहाँ पे जो ओशियनोग्राफी में या खास करके अगर बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में किस तरह के प्लास्टिक वेस्ट ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया. सो यू कैन यूज दैट एग्जाम्पल एज वेल इफ यू राइटिंग इन मेन्स पेपर. So some development and adaptations effort has to be reduce the vulnerability. We have to see that how we can reduce the vulnerability and make a sustainable use of our choice and even the fuel or energy that we're using in the right directions, right? Across sector ये जरूरी है कि जो vulnerable peoples हैं खास करके जो system observe की जाती है वो disproportionately affect भी हो रही है. And even the rise in the weather and extreme has led to some irreversible impact in the natural and human system that has pushed beyond the ability to adopt. So we need to have a measures, the green measures, the clean energy measures that is essentially required to ensure that जो भी environmental impact है
वो वैसे हो जो उसके लिए बहुत ज़्यादा डेक्रीमेंटल हो, बिकॉज दीज थिंग्स आर इरिवर्सिबल इन नेचर। दैट आई हैव स्टार्टेड बिगिनिंग में आपको ये चीज़ें बताई हैं कि दीज आर इरिवर्सिबल, एंड द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुटिंग देयर एफर्ट्स। क्या क्या एफर्ट्स है, विल डिस्कस दैट ऑल्सो। आईपीसीसी की रिपोर्ट है सिटीज के बारे में, इंडियन सिटीज के स्पेसिफिकली। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडीज दैट वर साइटेड इन द आईपीसीसी रिपोर्ट, लखनऊ और पटना के बारे में बात की गई है दैट दीज सिटीज आर among the cities that predicted to reach a wet bulb temperature, right? एक metric of humidity है wet bulb, जो कहा गया ये दोनों cities में कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहने की बात कही गई है। सो व्हाट इज दिस वेट बल्ब टेम्परेचर? वेट बल्ब टेम्परेचर का मतलब होता है एक लोवेस्ट टेम्परेचर टू विच एयर कैन नॉट बी cooled by the evaporation of the water into air at a constant pressure, right? So you can expect this to be a temperature which would be more or less in year throughout, right? अगर winters में भी बात करें तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिप नहीं करेगी, और इस रीजन्स में क्लाइमेट चेंज की वजह से हमेशा टेम्परेचर राइज भी देखी जा सकती है। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर इज ऑल अबाउट, एंड इट कॉल फॉर द कूलिंग बाय द evaporation of the water into air at a constant pressure. Now, other cities like Bhubaneswar, Chennai, Mumbai, Indore, Ahmedabad, they have identified the risk of reaching wet bulb temperature of around 32 to 34 degrees Celsius with continued emissions. This is what the report specifically has to highlight. और कुछ states के बारे में बात की गई है like असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश and Haryana. There would be something which would be most vulnerable in due course of time in the future generations. सो आफ्टर ऑल इफ इमिशंस इज कीप राइजिंग, जो स्टेट्स हैं उनके जो वेट बल्ब टेम्परेचर है दिस इज समथिंग अराउंड एवरेज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस विच इज नॉट गुड एट ऑल, राइट? सो वी एज एन इंडिविजुअल, गवर्नमेंट के एफर्ट्स के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कितनी जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको कम कर सके। नाउ इंडिया के नेट जीरो एमिशंस के टारगेट है, दिस इज समथिंग वेरी important and evident of the fact that India is committed towards the green energy, clean energy and net zero emissions, right? तो COP26 के जो recent meeting हुई थी ग्लासगो में, Prime Minister himself has highlighted that the India would look forward to achieve a net zero emissions by 2070, and this meant that India would have no net carbon emissions, right? जो net carbon emissions है उसमें इंडिया की जो contributions होगी वो zero होगी। By 2030, India would also ensure 50% of its energy would be coming from the renewable source of energy. Efforts are already being made from the government, but what is like this is a long-term measures, right? तो इसके लिए एक conclusive actions की जरूरत है और जो results हैं थोड़े time में ही दिखेंगे। India would reduce the carbon emissions by 2030 by a billion ton and cut the emission intensely by the GDP it's around less than 45%. And India would also install 500 gigawatt of renewable energy by 2030. This is something, the latest target that India would be adding upon, और इसमें बहुत हद तक इंडिया ने सक्सेस भी अचीव की है। And 50 gigawatt increase in the existing target was there, that was added by the Prime Minister himself. Now, more about IPCC की रिपोर्ट क्या है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को जो हाईलाइट की गई है ग्लोबली उसको भी देखते हैं। According to the report, global sea level is likely to rise by 44 से लेके 46 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो सकती है अगर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स नहीं लिए जहां पे एमिशंस को कट किया जा सके। सो एवरी कंट्री हैज टू टेक अ एमिशंस वेयर दे आर कटिंग एंड टेकिंग अ प्लेज दैट जो कार्बन एमिशंस उनको रिड्यूस की जाए। अगर ये अभी कंट्रोल नहीं होती है तो ये आने वाले टाइम में इसके नंबर्स बढ़ सकती है, एंड इवन द आइस शीट कैन कोलैप्स अप टू 2 मीटर्स। अभी तो सेंटीमीटर्स की बात की जा रही है, ये आगे बढ़ के 2 मीटर्स तक हो सकती है, राइट? And even the slight change in the climate will also have a long-lasting impact on the Himalaya region due to the fragile economy. So definitely countries like India, Tibet, Bangladesh, these are the countries that would be severely impacted due to the changes that can be seen in the Himalayan ranges. So this is a time, a global effort, a collaborative effort is essentially required to save our planet, which was already being highlighted by the report previously also, but ये report से हमें lessons लेने की जरूरत है, and you can expect a mains question also. तो आप इस पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फोल्डर पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया उसके लिए नोट कर लें, कुछ और एडिशनल पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर व्यूज, इनकी क्या व्यूज रही है? थिंक टैंक है जिन्होंने अपने रिपोर्ट, खास करके जो आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है उसके बारे में कुछ कहा है। दे सेड that climate change will severely impact food productions and food security, something very evident and practical.
This is what the Council on Energy, Environment and Water has to say. This is basically a think tank जिन्होंने अपनी views दी हैं IPCC के reports पे. Now, droughts and heavy water will trigger the biodiversity loss as well as the human migrations. And to combat the surge crisis, the developing countries here like India would need significantly to scale up their adaptive capacity. So for India, it is very important to just look into the matter, understand the valuable suggestions that was incorporated by the stakeholders and take that suggestions and implement in the policy making. So this is how India could also look forward with all the possible solutions. Suggested remedies की बात की गई है. The IPCC report has noted that while progress in adaptations, planning and implementations have been observed across all the sectors and region, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि एक मल्टीपल बेनिफिट्स की जाए जहाँ पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो. एक ऑब्जर्व्ड एडेप्टेशंस गैप को भी देखने की जरूरत है so that we can fill it, right? And making initiative prioritize immediately in a near-term climate reductions, which will reduce the opportunity of transformational adaptations. तो इस तरह की adaptations हो एक opportunity provide करे that a transformation which is towards the positive side and it is less impacting on environment and more towards a sustainable way. Now moving to the other news, PM Gati Shakti to boost public-private partnership, very important and evident in terms of General Studies paper 3 in the mains, that is Indian economy and issue related to planning, mobilization, resource growth and development. So Prime Minister ने recent एक pre-budget webinar को address किया where he actually was focusing on Gati Shakti project. So Prime Minister has urged the state government as well as the other stakeholders to adopt the Gati Shakti portal for planning the infrastructure project और development of socio-economic zone. जो एक special economic zone है जिसको SEZs भी कहते हैं, उसको develop करने के लिए गति शक्ति project की use करने की बात कही गई है. The Prime Minister has asked all the corporate houses, the partners, the PPP model should be there and with the government to increase the investment and contribution in the development of the country. So for any country, आप जितनी भी developed countries के example लेंगे, private player is playing a very important and significant role. So it is evident that India would essentially require a triple P model to enhance the level of development in the country in terms of infrastructure and logistic parts. So PM Gati Shakti है क्या? Basically this was launched year back. इसको National Master Plan भी कहते हैं for multimodal project. So Gati Shakti scheme or you can call it National Master Plan for the multimodal connectivity. पूरी aim है is to have a coordination, planning and executions of infrastructure project and bring down the logistic costs, right? तो जो logistic cost है उसको कैसे कम किया जा सके और infrastructure के जो projects हैं उनमें एक level of state of art technology भी incorporate हो. गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया था इस प्रोग्राम को एंड दे कम अप विद सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटिंग 60 मिनिस्ट्रीज को इंटीग्रेट करने की बात की गई है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. नाउ द पीएम गति शक्ति वुड आल्सो इंश्योर कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए की जाए ताकि इसकी यूटिलाइजेशंस रियल टाइम ट्रैकिंग को बढ़ाया जा सके. The portal is expected to reach by March end of this year, that is by 2022. We can expect the project or portal to be ready very soon. Now some specific feature of PM Gati Shakti. So first is the integration of all infrastructure projects seamlessly. So that is the reason the government has come up with the integration of 16 ministries here. Also breaking down the silos in the infrastructure development, जो भी problems हैं, जो bottlenecks हैं, उनको खत्म करना. Adapting a speed to connectivity, right? This is something very important and evident with regards to the PM Gati Shakti scheme. Now, high planning and executions within the common visions. उसके अलावे to cover better initiatives like Bharat Mala, Sagar Mala, Port, Udan, Special Economic Zones या रेलवे के प्रोजेक्ट्स को एक इम्प्रूव करने के लिए ये कनेक्टिंग पिलर्स की तरह काम करेगी. इवन social infrastructure like hospital, universities and integration in the next phase would be the part of PM Gati Shakti scheme. Other is to develop the new possibility for creation of future economic zones, right? अब जिस तरह से special economic zones है उसके अलावे future economic zones भी आएंगे. Now expenditure on developing projects, government has also focuses. प्राइम मिनिस्टर ने स्पेसिफिकली कहा कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वो आने वाले टाइम में बढ़ी है अप टू 4-fold. हाउ मच? बाय 4-fold. सो व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर और बजट एलोकेशंस की अगर बात करें जहाँ 2013-14 में ये नंबर्स बजट एलोकेशंस में 1.75 लाख करोड़ रुपीस थी, इसको बढ़ा करके
अब 7.5 लाख करोड़ रुपीस कर दिया गया है फॉर द करंट बजट. सो यू कैन सी द इंक्रीज दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इवन टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी. तो ये काफी अच्छी बात है जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही है. Now, this has led to the greater investment and job creation. Once the investment would be there in the infrastructure sector, it will definitely involve a lot more informal and formal job that is essentially required and contributing towards a nation building itself. यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म भी बनेगी. एक ऐसी प्लेटफॉर्म होगी जहाँ पे पूरी कोऑर्डिनेशन की जाएगी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड इन अ व्यू टू लोअर द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन वे टू डेवलप. बेसिकली जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज में ये ऑलरेडी प्रोग्राम्स इम्पैनल्ड है, उसी की कोशिश की जा रही है इंडिया में. So the Prime Minister has said that the Unified Logistic Interface Platform will integrate 25 digital system and 6 ministries. जो यूपी खास करके अगर बात करें यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म की, दिस विल हेल्प टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट जो इंडिया की ऑलमोस्ट आज 13 to 14% ऑफ जीडीपी की यूटिलाइजेशन करती है. Now, the Prime Minister has also encouraged the private sector that I've told you, like in a mode of triple P that would be coming up. Gati Shakti की जो project है that will offer 400 layers of the geospatial data जिसमें government ने अभी deregulations की है. We have discussed that news how this is going to help the other private players also, क्योंकि बहुत सारे जो rules regulations है, paper work है, permissions है, उसमें exemptions दी गई है companies को. So these are some of the things where infrastructure, forest, land and industrial state would be getting a boom in terms of the infrastructure development that we can have. But we need to ensure अगर forest land है तो यहाँ पे NOC पूरी हो ताकि environmental decrement या फिर जो environment impact assessment है उसके लिए हमें कहीं कोई दिक्कत. Now, logistic की अगर बात करें, this is to enhance and design in a way designed to enhance the efficiency and reduce the logistic cost. इसके तीन important pillars हैं. First is to provide a real-time information to all stakeholders in line with the objective of PM Gati Shakti and enhance India competitiveness in the global trade. तो जो competitiveness exist कर रही है global market पे, उस level की enhancement की ज़रूरत है. So this is what the whole idea is about United Logistic Interface Platform. Now, other news, Quadgrouping is a diplomatic arrangement. This particular news is important for General Studies Paper 2. Bilateral regional grouping and agreement involving India's and affecting India's interest. बात करें रिसेंट में जो यूएस के पैसिफिक फ्लीट के कमांडर है, ही हैज विजिटेड इंडिया. ही वाज एक्चुअली देयर फॉर द मिलन एक्सरसाइज व्हिच वाज टेकिंग प्लेस. जो प्रेसिडेंशियल रिव्यू मीटिंग के बाद ये जो मिलन एक्सरसाइज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे. एंड ही सेड that the quad grouping is something should be considered as a diplomatic arrangement. This is what he has to state, official statement. तो quadrilateral security dialogue है क्या? एक quad informal strategic forum है जो comprise करती है 4 important nations को. I think most of you must be aware of this. That include of US, that is United States of America, India, Australia and Japan. तो ये आप नाम जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि apart from UPSC for many other competitive examination they can ask you which among the member countries. Now, one of the primary objective of the Quad is to work towards open, free, prosperous, and inclusive Indo-Pacific. So, the more focus, almost you can say the entire focus is on the Indo-Pacific region. ये जो grouping है, ये actually first time meet की थी 2007 में on the sideline of the ASEAN, that is Association for South Asian Nation. But the final formulation had taken place in due course of time. एम क्या है क्वाड ग्रुपिंग की? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स है और उसके जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं उनको देखने की बात की गई है रिसेंट टाइम्स में कि किस तरह से हमें ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पे काम करनी है. एंड सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स दैट हैज बीन हाइलाइटेड एज द एम ऑफ क्वाड ग्रुपिंग इंक्लूड delivering humanitarian assistance and disaster relief to the friendly and foreign countries, conducting counter privacy operation. First and foremost priority. Second, enhancing maritime safety and security in the region. Specifically, this is in regard to the Indo-Pacific. तो Indo-Pacific में जो problem है उसको लेकर के यहाँ बातें की गई है. Strengthening Pacific cooperation with special emphasis on India and Australia cooperations. Significance क्या है इंडिया के लिए क्वाड की? सो ये बिलीव की जा रही है जो फोरम है ये चाइना को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस बनेगी वेयर इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री राइज ऑफ चाइना कैन बी ओवरटेकन बाय इंडिया. इंटरेस्टिंगली चाइना की हॉस्टिलिटी की बात करें इवन द बॉर्डर्स, इंडिया कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम द अदर क्वाड नेशंस टू काउंटर द कम्युनिस्ट नेशन. स्पेशली चाइना की बात हो रही है बिकॉज वी हैव सीन जो अभी जिस तरह से रिसेंट में ईस्टर्न लद्दाख डोकलाम के रीजन में जो एक्सप्लेशंस हुई हैं वहाँ क्वाड की ग्रुपिंग एक प्रेशर की तरह काम की है चाइना के लिए.
In addition, India can have take help of the naval front in conducting the strategic explorations of the Indo-Pacific region. So definitely to counter in Asia, इंडिया में अगर बात करें, एशिया में इंडिया और चाइना के बीच में जिस तरह से टसल है, उसमें क्वाड एक अलग ही फेवर करेगी इंडिया के रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए और इंडिया के ओवरऑल जो प्रेजेंस है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए. Now, India to send humanitarian assistance to Ukraine. This particular news is important for your general studies paper 2, that is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design and implementations. So recently government of India ने ये कहा है that they have managed to accelerate the effort, जहाँ पे जो evacuation process है यूक्रेन में जितने बच्चे हैं या फिर जो सिटीजन है जो वहाँ पे रह रहे हैं, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे मेडिकल की एजुकेशन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, उन बच्चों को वापस लाने की बातें कही गई है फ्रॉम यूक्रेन, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द ऑफिशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन रखी गई है, उसका नाम है ऑपरेशन गंगा. वेरी इंपॉर्टेंट, दे में आस्क यू यूक्रेन में जो अभी इवैक्यूएशन प्लान चल रही है उसका नाम क्या है. तो ऑपरेशन गंगा इज अ नेम एंड इट इज फंडेड इंटायरली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जितने भी जो एविक्यूज हैं जिनको वापस लाया जा रहा है उनको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं. Although the ground situation in Ukraine remained complex and fluid, almost 8,000 Indians जो हैं they have left Ukraine, and this is something officially coming from the data of the Ministry of External Affairs. और जो External Affairs की मिनिस्ट्री है उन्होंने उसके स्पोक्सपर्सन ने कहा है that almost 1,396 Indians were brought back and 6 flights in a day has also taken place as a part of evacuation missions. तो evacuation missions में इतने लोगों को वापस लाई गई है. नाउ एक्सटेंडिंग इवैक्यूएटिंग हेल्प, इंडिया ने कहा है कि हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनकी भी हेल्प की जाएगी. सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सेड दैट इट वुड हेल्प द नेबरहुड कंट्रीज एंड फ्रॉम द अदर डेवलपिंग कंट्रीज टू फाइंड देमसेल्व्स स्टैंडर्ड इन द वॉर टू यूक्रेन, राइट. तो इंडिया वुड बी हेल्पिंग देम ऑल्सो. And the Prime Minister has said that the first batch of humanitarian aid to Ukraine would also be dispatched as early as possible. तो जो यूक्रेन के भी लोग हैं उनके लिए भी हेल्प हो रही है, फूड या फिर अदर फूड स्टफ्स जो हैं वो इंडिया असिस्टेंस के तौर पे देगी. अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इवैक्यूएशंस बॉर्डर्स में जो खास करके हो रही है, तो रूट चेंज की गई है. अर्लियर जो क्रॉसिंग लाइन होती थी वो यूक्रेन पोलैंड या फिर यूक्रेन रोमानिया की बॉर्डर के थ्रू होती थी. नाउ द न्यू रूट हैज बीन ओपन थ्रू मोल्डोवा. सो दिस इज हाउ थिंग इज टेकिंग प्लेस. एंड इवन अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई है उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया वोटिंग से. बट इट इज़ नॉट लाइक यूक्रेन को एड नहीं देगी. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंडिया भी एड देने के लिए तैयार है यूक्रेन. Now, Ukraine situation, India's national interest. This particular news is important for General Studies Paper 2, Effect and Policies for Developed and Developing Countries on India's Interest and India's Diaspora. तो ये एडिटोरियल लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने. ही इज़ अ PhD स्कॉलर फ्रॉम economics in Harvard University and also a member of parliament, right? So let's understand what I'm going to discuss under this editorial. There are 3 important subheads. First is Russia-led sovereign empire. Other is BRICS and its commitment and path for India. The entire editorial focuses upon Russia-Ukraine conflict and India's role, right? So all the news related to Russia and Ukraine has been continued in discussion. पिछले 2-3 दिनों से हमने अपने न्यूज़ एनालिसिस में इसको इंक्लूड किया हुआ है. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर विद द ग्राउंड रियलिटी एंड द इंटेंशन ऑफ रशिया इन टर्म्स ऑफ यूक्रेन. तो इसी डेवलपमेंट में आज के एडिटोरियल में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. सो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने रीसेंट मिलिट्री एड्रेस में ये कहा दैट ये जो ऑपरेशन है यूक्रेन के लिए वो एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है टू प्रोटेक्ट the abused people by the genocides of Kiev regime for the past 8 years, right? But जो experts हैं उनका ये कहना है कि रशिया की अपनी हिडन इंटरेस्ट है, ना कि वो किसी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है. रशिया ये चाहता है कि जो नाटो फोर्सेज है उसकी ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ना हो और यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे, बिकॉज रशिया वांट टू बी अ लीडर इन द एंटायर रीजन. दिस इज अ मेन इंटेंशन ऑफ रशिया. दिस इज व्हाई दे कैन मेक एनी डिप्लोमैटिक एक्सक्यूजेस, बट द ट्रुथ इज दिस. So the President Putin has also said that he will strive for the demilitarization and denazification of Ukraine that will bring justice, who committed numerous bloody Crimea's crimes against the civilians also. So let's see how things are being executed, because the experts are of the opinion that Putin has some hidden interest which he is looking forward with an alliance that existed during the USSR. So let's see how things are moving ahead. तो रशिया लेड सोवरेन एम्पायर की बात की गई है. बेसिकली इवन द रशिया प्रेसिडेंट सीम्स टू बिलीव कि यूक्रेन जो है एक इलेजिटिमेट कंट्री है
उसके जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो रशिया की एक राइटफुल है, ऐसा कहना है वहाँ के प्रेसिडेंट का। एंड हिज अल्टीमेट गोल इज टू बी मेक यूक्रेन अ वेसल ऑफ फ्यूचर, जहाँ पे इमेजिनरी रशिया लेड सोवरेन यूनियन एम्पायर खड़ा करने की बात ही कही गई है रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से। दिस इज द इंटेंशन दैट ही हैज ऑलरेडी बीन फोरकास्टेड इन ईयर बिफोर। सो 1991 में जब यूनियन सोवियत रिपब्लिक की डिसनिगेशन हुई, वर्ल्ड ने एक नए जियोपॉलिटिकल हाउस देखा और कॉन्फ्लिक्ट हुई, जहाँ पे यूक्रेन के साथ साथ 15 और कंट्रीज को डेवलप किया गया। उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टेजेस बनी हुई हैं वहाँ पे। Now, even the ethnic, political, and some factor play a very important role in splitting, which is something inevitable. क्योंकि जो रशिया सेपरेटिस्ट यूक्रेन में रहते हैं वो चाहते हैं कि रशिया उनसे इंटीग्रेट करे, वापस से रशिया ऑक्युपाई करे उनको। बट बहुत ऐसे जो यूक्रेनियन पीपल है, दे वांट दैट दे शुड बी द पार्ट ऑफ ईयू, दे शुड ज्वाइन द नाटो फोर्सेस, राइट। ब्रिक्स और उसकी कमिटमेंट को लेकर के अब इंडिया के एस्पेक्ट से अगर देखें, इंडिया हैड डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग। जो वोटिंग हुई उसमें इंडिया, चाइना और यूएई ने एब्सटेन किया, राइट। सो नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे इंडिया श्योरली रिकॉग्नाइज द ब्रिक्स। और ब्रिक्स की जो हार्डकोर मोटिव थी ब्रिक्स डिक्लेरेशन में, ये कहा गया था कि जितनी भी ब्रिक्स के कंट्रीज हैं वो पीसफुल रहेंगे हर एक कंट्रीज के प्रति, एंड इवन दे वुड नॉट हैव एनी फोर्सेस अगेंस्ट एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के लिए। बट रशिया ने कंप्लीट वायलेशंस की हैं ब्रिक्स की। सो वॉट एवर रशिया इज डूइंग इज अ कंप्लीट वायलेशंस ऑफ द ब्रिक्स एग्रीमेंट और द ब्रिक्स डिक्लेरेशन, जिसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। Now, path for India की अगर बात करें, एक लॉन्ग टर्म में इंडिया हैज फेल्ड टू बिकम and make the things united in a direction where reality in the global present is diminished. Even instead of India, basically India need friends and collaboration without bowing to the country. अगर रशिया की बात करें, रशिया डज नॉट हैव इंडिया सजेशंस, जहाँ पे एक अनाउंसमेंट की गई थी कि यूएन जनरल असेंबलीज में अगर फिर से ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आती है तो इंडिया को अपने वोटिंग पे एक वापस से कंसिडर करने की जरूरत है कि वो क्या सोचता है इस स्टैंड को लेकर, बिकॉज मेनी पीपल आर ऑल्सो स्टक एंड इवन रशिया इज नॉट, दे हैव जस्ट appreciated the part that India has abstained from the voting, but उसके अलावा और भी कुछ बातें नहीं हुई. So India should urge the United States to restructure the objective and priority of the Quad. That is something essentially required. And China के लिए जो hostile environment create की है इंडिया के लिए, जहाँ पे global competitions भी है इंडिया में चाइना के साथ in terms of trade and many other things, even the South China Sea या फिर क्वाड ग्रुपिंग की बात करें, तो ये सारे फैक्टर्स को इंडिया को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा to get help from other countries if India is abstaining or like they're favoring Russia, or you can say not favoring, we are actually neutral on that part. So this is an ethical dilemma and diplomacy that actually exists all the time when India, जब इंडिया के स्टैंड की बात आई है तो इस तरह के ethical dilemma हमेशा ही डिप्लोमेसी में एग्जिस्ट करते हैं. So this was all about the editorial part. Moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday's questions. For first question, the correct option is A. For second question, the correct option is C. Today's MCQs questions, Maitru Setu project, आपको बताना है, it symbolizes the bilateral relationship between the friendly ties India and Sri Lanka. The project is taken up by the Land Port Authority of India. So most of you must be aware. अगर नहीं पता है तो उसकी correct option जरूर check करें. Second question of the day, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है टेस्ट लिक 2, कौन से कंट्रीज के बीच में, इंडिया श्रीलंका, इंडिया जापान रशिया, इंडिया अफगानिस्तान और इंडिया यूपेकिस्तान. तो इस तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. दोज ऑफ यू who are appearing for a CAPF examination also, for them also this is very important. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.